Please do not forget to subscribe the channel and please press the bell icon. Okay students, good morning once again. Let's start the topic, that is midpoint formula. Now midpoint formula, it is an application of section formula. बच्चों section formula हमने पढ़ा था. We have used it in the last two sessions, last 2-3 sessions. Section formula is for if we have the coordinates of the point A and B as x1, y1 and x2, y2, and P is a point whose coordinates are taken as x, y, divides the line segment joining AB in the ratio m1 is to m2, then the coordinates of P are given by x is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, and y is equal to m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. Right? Now in this case, here P is a point which divides AB in the ratio m1 is to m2. Now when we say P is midpoint of AB, P is midpoint of AB, that means now the figure is like this. This is A, this is B, here it is x1, y1 coordinates of A, x2, y2 are the coordinates of the point B, and we are saying that P is the midpoint of AB whose coordinates are taken as x, y. Now when we say P is midpoint of AB, that means AP will be equal to PB, and also AP upon PB, the ratio will be 1:1. So here by taking the ratio as 1:1, that means here m1 is 1, m2 is also equal to 1. This is m1, m1 is 1 and m2 is also equal to 1. So by taking the ratio as 1:1, when we apply the section formula sorry, इस फॉर्मूले में m1 और m2 की वैल्यू जब हम 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा बच्चों x is equal to x1 plus x2 upon 1 plus 1, that is 2. x1 plus x2 upon 2, y is equal to y1 plus y2 upon 2, and this formula is known as midpoint formula. This is known as midpoint formula. Now let's discuss a few questions based on this. For example, first example, based on midpoint formula, the coordinates of A and B are given. The coordinates of A and B are, suppose 2, 5, 4, 7. Find the coordinates of the point P. You have to find the coordinates of the point P where P is midpoint of AB. P is midpoint of AB. So very simple solution, students. Solution to this, P is midpoint of AB. So we will have x is equal to x1 plus x2 upon 2, 2 plus 4 upon 2, y is equal to
y1 plus y2 upon 2, 5 plus 7 upon 2. So what are the coordinates? 3, 6. So x is 3, y is 6. So the coordinates of P are 3, 6. That is the midpoint of AB. This is one variety of question. Another example we can have here. Example number 2. Suppose if I say P is midpoint of AB and the coordinates of A are given to you as -1, 3. Coordinates of P are given to you as -5, 7. You have to find out the coordinates of the point B. So as we have discussed right now, that this is your x1, y1, this is your x, y, and we have to find out x2, y2. So again, let's use the same formula. x1 plus x2 upon 2 is equal to x. That means -1 plus x2 upon 2 equal to -5. So from here we'll get -1 plus x2 is equal to 10, or x2 is equal to -10, x2 is equal to -9. Yes, x2 is equal to -9. And y is equal to 11. Similarly, y1 plus y2 upon 2 is equal to 7. y1 is 3. 3 plus y2 upon 2 equal to 7. Therefore, 3 plus y2 is 14, or y2 will be 11. So therefore, the coordinates of the point B are -9, 11. This is your answer. Right? Okay, now next one, that is prove that these are the vertices of a parallelogram. तो बच्चों ये अपन ने पहले जब डिस्कस किया था तो यूज किया था हमने डिस्टेंस फॉर्मूला, उसका हम शॉर्टकट यहाँ पे लगा सकते हैं. एंड डेफिनेटली वी कैन प्रूव द पैरेललोग्राम विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट आल्सो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा था, तो डिस्टेंस फॉर्मूले में हमने चारों साइड्स की लेंथ निकाली थी, एंड वी हैव सीन दैट इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम. सो हियर व्हाट वी नीड टू डू यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगाना है, पहले हम फिगर बनाएंगे बच्चों, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यदि आप फिगर बना लेते हैं तभी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि अपोजिट वर्टाइसेस कौन से हैं. तो ए के वर्टाइसेस है -2, -1, बी के वर्टाइसेस है आपके पास 1, 0, सी के वर्टाइसेस है 4, 3, और डी के वर्टाइसेस है 1, 2. Now here when we are using the distance formula, will be use the concept that AC diagonals की प्रॉपर्टी यूज करेंगे बच्चों. तो यहां पे हम जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे, that is diagonals bisect each other. Diagonals of a parallelogram bisect each other. Diagonals of a parallelogram bisect each other. और बच्चों जब bisect each other बोला है, इसका मतलब दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम होता है. देखिए AC का मिड पॉइंट है O और BD का भी मिड पॉइंट होगा O. So both the diagonals have the same midpoint. So let's find out the midpoint of AC. Midpoint of AC
AC का मिड पॉइंट निकालना है बच्चों। अब यहां पे देखिए -2 + 4 x1 + x2 -2 + 4 which is equal to 2 and 2/2 is 1 -1 + 3 again 2 -1 + 3 again 2 2/2 is 1. So midpoint of AC is 1, 1. Now next we'll find out the midpoint of BD using the same formula. Midpoint of BD 1 + 1 2/2 that is equal to 1 0 + 2 2/2 again it is equal to 1. So we say that midpoint of AC equal to midpoint of BD. Midpoint of BD, therefore ABCD is a parallelogram. Midpoint of AC is equal to midpoint of BD, therefore ABCD is a parallelogram. अब बच्चों यदि इस क्वेश्चन में पैरेललोग्राम की जगह यदि आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो फर्स्ट स्टेप हम ये कर सकते हैं, और उसके बाद रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए आप दोनों डायगोनल्स की लेंथ निकाल लीजिए। इफ बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल इट विल बिकम अ पैरेललोग्राम। मतलब midpoint of AC equal to midpoint of BD, find the length of AC, find the length of BD. If you get AC is equal to BD, then both the properties are satisfied, that is diagonals bisect each other and diagonals are equal, therefore it will become a rectangle. Okay, next example is 3 consecutive vertices of a parallelogram. 3 consecutive vertices of a parallelogram are A 1, 2, B 1, 0, C 4, 0. Find the coordinates of fourth vertex. फोर्थ वर्टेक्स, तो डी के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करना है बच्चों। डी के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करना है। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी बी x, y. Now as we have discussed just now, diagonals bisect each other. Diagonals of a parallelogram bisect each other. तो इसका जो मतलब होता है वो ये होगा बच्चों, midpoint of AC equal to midpoint of BD. Midpoint of AC equal to midpoint of BD. अब ये कॉन्सेप्ट हम यहां पे अप्लाई करते हैं। AC का मिड पॉइंट लिखिए बच्चों, AC का मिड पॉइंट 1 + 4/2, 1 + 4/2 and 2 + 0/2 equal to BD का मिड पॉइंट x + 1/2, x + 1/2, y + 0/2. Now we have learned in class 9th also. बच्चों यदि दो पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स दिए वो इक्वल है, इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा और y कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट के इक्वल होता है। सो नाउ इक्वेटिंग दिस, ये इक्वेट करना है बच्चों आपको। दीज आर इक्वल एंड दीज विल बी इक्वल, ये इक्वल होंगे और ये इक्वल। तो यहाँ पे हम इक्वेट करते हैं 1 + 4/2 equal to x + 1/2.
2 cancel. We get x plus 1 is equal to 5. That means x is equal to 4. Similarly, 2 plus 0 upon 2. 2 plus 0 upon 2 equal to y plus 0 upon 2. So here 2 cancel again. So we get y is equal to 2. That means the coordinates of fourth vertex D, that is 4, 2. This is your answer. Okay, next example, students. If 1, 2 consecutive or vertices of a parallelogram taken in order are A 1, 2, B 4, y, C x, 6, D 3, 5. Find x and y. Vertices of a parallelogram taken in order are A 1, 2, B 4, y, B 4, y, C x, 6, D 3, 5. टेकन इन ऑर्डर लिखा है बच्चों, इसका मतलब ए बी सी डी होगा। ऐसा नहीं कि आपने ए बी यहां लिख दिया, तीसरा कोऑर्डिनेट सी यहां लिखा और डी यहां लिखा। लेबलिंग इज ऑलवेज इन द साइक्लिक ऑर्डर। हमें हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में चलना है, चाहे आप ऐसे चलिए मतलब एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज चलिए, दैट डिपेंड्स ऑन यू। But the thing is, you have to write it in the cyclic order only. A, B, C, D. I have written it like this: A, B, C, D. आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, A, B, C, D. Doesn't matter. दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा आपका, सॉल्यूशन भी सेम होगा। So here again, we know that it is a parallelogram. So diagonals of a parallelogram bisect each other. So again we use the same concept, midpoint of AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अब बच्चों AC का मिड पॉइंट लिखिए आप 1 प्लस एक्स अपॉन 2, 1 प्लस एक्स अपॉन 2, 2 प्लस 6 अपॉन 2 इक्वल टू 4 प्लस 3 अपॉन 2, y प्लस 5 अपॉन 2, right? Again in the similar way, x coordinate will be equated to x coordinate, y coordinate will be equated to y coordinate. So here we get 1 plus x upon 2 equal to 4 plus 3, 7 upon 2, and 2 plus 6, 8 upon 2 equal to y plus 5 अपॉन 2। x को x से इक्वेट किया, y को y से इक्वेट कर दिया। यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 2 ये सबका कैंसिल हो गया। अब आप जब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यू विल गेट x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 दैट इज 6, y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 दैट इज 3। सो दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स।
length of median, length of median through the vertex A, through the vertex A, through the vertex A of triangle ABC, of triangle ABC, whose vertices are A3 minus 1, B5 3, C7 minus 3. Okay. Now let's draw the figure, rough figure. ABC, coordinates 3 minus 1, 5 3, 7 minus 3. Students, in this question will be having 3 medians, लेकिन आपको सिर्फ एक मीडियन की लेंथ निकालना है, वो है AD. बाकी दो अपन अभी डिस्कस करेंगे. तो मीडियन, as we have discussed, that D is midpoint of AB. D is midpoint of AB. AD is median. Let's find out the coordinates of D. Midpoint formula लगेगा बच्चों. Coordinates of D. BC का midpoint है 5 plus 7, 12/2, 6. 6 कैसे आया? 5 plus 7/2, 3 minus 3/2. That is, coordinates of D are 6, 0. इस पॉइंट के हमको कोऑर्डिनेट्स मिल गए बच्चों 6, 0. Now we have to find out the length of the median AD. AD की लेंथ फाइंड करना है. तो बच्चों फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले पे. A के कोऑर्डिनेट से 3 minus 1 और D के कोऑर्डिनेट से 0. तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए. विल गेट अंडर रूट 6 minus 3 whole square plus 0 plus 1 whole square. So this is under root 3 square plus 1 square. Root 10 units is the length of the median. See, here the question was find the length of the median through the vertex A. हो सकता है कि आपको ये कहा जाए find the length of medians. Medians of triangle. तो बच्चे जब मीडियंस ऑफ ट्राइंगल बोला है तो यहां पे आपके पास तीनों मीडियंस आ जाएंगे. One was AD, second is BE, and the third one would be CF. तो सबसे पहले आप DEF के मिड पॉइंट्स निकाल लेंगे. कॉन्सेप्ट अभी हमने डिस्कस किया. तो यहाँ पे D के कोऑर्डिनेट्स हमने ऑलरेडी निकाल लिए थे. E के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं 3 plus 7
10 upon 2 that is 5, minus 1 minus 3 minus 4 minus 4 upon 2 that is minus 2. F के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं बच्चों. 5 plus 3 8 upon 2 that is 4, 3 minus 1 2 upon 2 that is 1. अब हमको AD DEF तीनों के कोऑर्डिनेट्स मिल गए. We have to find out the median BE with the help of distance formula and also the length of median CF with the help of distance formula. BE 5 minus 5 whole square 0 square 0 plus 3 minus 2 1 square. So that median is 1. BE, length of median BE is not 1, 3 minus minus 2, that is 3 plus 2 5. So under root 5 square, that will be 5 units. And CF 7 minus 4 3 square, it is under root 3 square plus minus 3 minus 1 minus 4 ka square, that is 9 plus 16 5 units. 9 plus 16 25, and this will also be 5 units. Okay, so this way we can find out either only the required median or we can find out the length of all the medians of a triangle. Okay, sorry, just a correction here. D is midpoint of BC, beta. D is midpoint of BC, not AB, right? Okay, students, now you see all the three medians pass through the same point. This is the point of intersection of medians, and we have learnt earlier also point of intersection of medians of a triangle. Intersection of medians of a triangle is known as centroid of a triangle. Centroid. तो बच्चों centroid के कोऑर्डिनेट्स यदि आपको निकालना है, the coordinates of centroid are given by the formula. A के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, C के कोऑर्डिनेट्स है x3 y3. तो यहाँ पे तीनों मीडियंस बनाते हैं, तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा. दिस इज वन मीडियन, दिस इज अनदर मीडियन, एंड दिस वन इज द थर्ड मीडियन. सो दिस इज AD हियर, BE हियर, CF हियर. This is centroid. This is centroid, and the coordinates of the centroid, if I write here as x comma y, are given by x is equal to x1 plus x2 plus x3 upon 3, y is equal to y1 plus y2 plus y3 upon 3. This is the formula for coordinates of the centroid of a triangle. See, this we will prove in the next class. कल हम इसको प्रूव करेंगे, जस्टिफाई करेंगे कैसे आया. ठीक है. So this is the formula for centroid of a triangle. That is, if the coordinates of ABC are given as x1 y1, x2 y2 and x3 y3, then the centroid is given by x1 plus x2 plus x3 upon 3, y1 plus y2 plus y3 upon 3. x1 plus x2 plus x3 upon 3, y1 plus y2 plus y3 upon 3. Okay, so these are the coordinates of centroid of a triangle, right? We'll be proving it in the next class. Okay, thank you, have a nice day.